ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, ओवरसीज़ इंडियंस, बांग्लादेशी, दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग रहते हैं उनके लिए एक अमेजिंग न्यूज़ है जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और बाइनेंस ने जो सेंड का एक नया ऑप्शन अवेलेबल किया है हम सब के लिए, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। और विद इन 5 मिनट्स इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि आप एक अकाउंट से दूसरे बाइनेंस अकाउंट में पैसे कितनी ईजिली, कितना रैपिडली ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़, without any FIA problems, without any banking issues. This is an amazing feature that Binance has introduced to us. My name is हसीब खान, बिग सॉल्यूशंस फॉर यू के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, तो आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वी ओनली हैव 5 मिनट्स टू फिनिश दिस वीडियो ऑफ। चलें आगे बढ़ते हैं। बाइनेंस की ऐप आप ओपन करें और बाइनेंस की ऐप को खोल के आप होम पे क्लिक करें। होम के बाद आप मोर पर क्लिक करें। मोर के बाद आप ये देखें नया ऑप्शन है इनका सेंड का, इस सेंड के ऑप्शन पे बटन पे आप क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ ये 3 ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, फ़ोन नंबर के थ्रू भी भेज सकते हैं और पे आईडी के ज़रिए भी भेज सकते हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ कहीं भी आप किसी को भेज रहे हैं उनसे आप कहें कि उनका जो बाइनेंस का अकाउंट है उसकी पे आईडी आपको भेज दें। पे आईडी पे क्लिक करें फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आप पे आईडी एंटर कर दें, जो भी पे आईडी है, एंड मेक श्योर यू एंटर द करेक्ट आईडी, यू मेक नो मिस्टेक्स। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अगर आपने गलत अकाउंट डाला तो वो पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब आपने वो डाल दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करें। हम डॉलर्स, BUSD इज बाइनेंस डॉलर्स, सेम एज USDT, click on that, let's say $50 for the demo purpose, and then add a note for example, and I would like to say this is a family gift. Okay, click confirm, click continue, and now it's going to confirm, are you happy with the information you have provided? $50 family gift, कहाँ से भेजनी है आपने, स्पॉट वॉलेट में आपके पास है तो आप भेज रहे हैं, perfect, click on confirm, and now it's asking you for your security pin, so enter your security pin. So देखें, it is secured. Voila, there you go. In less than 2 minutes we have successfully sent dollars to Pakistan. Now you can ask them to use it as soon as you can. If you would like to send another one, and for the next time, the beauty of this option is the next time when you want to send it, let's say if I would like to send another transaction, now you can see this recent. So if you click on recent, then anyone who you have sent any money before will be listed, so you don't need to add the ID every single time. It's only the first time. I did it on first time, so you can see how you could do it as well. Hope this helped. Thank you for watching. Please do subscribe, like and share.